Okay, so we're talking about channel proteins. So they are gated in order to control the ion permeability. So you have voltage gating or chemical gating. Now, in the case of chemical gating, we're talking about acetylcholine. It binds to the receptor and then the channel opens. So my question was, is the acetylcholine receptor and the channel a two in one thing? Like both are in the same, molecule or same complex, or are they like situated differently? Receptor here and ion channel somewhere. I know this is a very like detailed question and a very minute question. But anyways, I felt the need to ask it and get it clarified. So anyways, let's take the help of ChatGPT. Um, Now, first of all, so it's going to give us all the details. Let's start from the scratch. Now, ligand-gated ion channel. It's a membrane protein that opens or closes when a chemical messenger, such as a neurotransmitter, binds to it. When it opens, specific ions such as sodium, potassium, calcium, or chloride, they move across the membrane, changing the membrane potential and triggering a cellular response. So this is basically a ligand-gated ion channel. Now, its stimulus is basically binding of a chemical ligand. It can be a neurotransmitter, and it's very fast. And then it's found in nerve cells, muscle cells, and especially synapses. It converts a chemical signal to an electrical signal. What happens is a neurotransmitter, like acetylcholine, it's going to be released from presynaptic neuron. It binds to a ligand-gated receptor on the postsynaptic membrane, and the receptor changes shape and it opens its ion channel. Specific ions flow in or out, and it changes the membrane potential. Now the attention needs to be diverted to this sentence that says specific ions flow in or out. This means that the ions they're not like it's not certain that every time sodium and potassium have to do work. No, in cases of different receptors and different ligands, there'll be different ion movement, right? But you just need to know for now that if there's depolarization, so basically the cell will be excited. If there's hyperpolarization, the cell will be inhibited. Very important. Now, this is a table of examples of ligand-gated ion channels. Now, this will clarify what I mentioned above on line 4 or sentence 4. So basically, you have different ligands: acetylcholine, GABA, glycine, glutamate, serotonin. I mentioned they can be any chemical, any protein, anything. Now, for acetylcholine, you'll have nicotinic acetylcholine receptor. In this case, the sodium is going to move in and potassium will move out. And that's when excitation is going to take place. Depolarization will happen and muscle will be contracted. In case of GABA, the ion movement is of chloride, and same with glycine. And in cases of glutamate, you have sodium and calcium, right? And it's not important that the ion is same in every case. You have different ions. For example, I told you GABA and glycine, they have chloride ions. Yeah, so this is a comparison of ligand gated and voltage gated. In ligand gated, there is binding of neurotransmitter, and it usually happens in synapses and it starts electrical signals. In voltage gated, there's change in membrane potential, and then the channel is open, right? And it's usually found in axons and muscle fibers, and it propagates electrical signals. So ligand gated ion channels are fast acting membrane receptors that open in response to neurotransmitter binding, allowing specific ions to pass and quickly change cell excitability, right? Now, here we're talking about how your cell has a membrane in order to separate the cytoplasm from the extracellular fluid. So, inside of the cell is separated from the outside of the cell. Now, the wall is selective. Now, the thing, why do we need the ion channels? That's because now your wall is selectively permeable. The cell membrane wall, that's cell wall or cell membrane, let's say cell membrane, it's selectively permeable to the ions like sodium, potassium, calcium, chloride, so they cannot pass freely through the membrane. But your body needs these ions, right? Why cannot they pass freely through? Because they're charged. So just in order to solve this issue, we have ion channels. Now, moving on, my question was, is the channel and the receptor in the above case different? So they're saying that the channel, it depends on the type of receptor. In ligand-gated ion channels, the receptor and channel are part of the same protein complex. So they are the same structure performing the two roles. So my question hence is cleared. Receptor part binds the ligand, channel part forms a pore and opens the receptor, binds its when the receptor binds its ligand. So yeah, it's basically two in one thing complex. Now again let's recap. निकोटीनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर में क्या होता है एसिटाइल बाइंड करता है रिसेप्टर साइट्स के साथ जो प्रोटीन है its shape changes and a central ion channel opens. Sodium rushes in, potassium goes out, and the membrane is depolarized. The same protein has both the receptor part and the ion channel part, right? Now,
uh, लेकिन this is not the case in all the receptors, right? Because for example, ligand gated ion channel, it will have the ion channel also, and it have the receptor also. But GPCR and enzyme linked receptor, they'll just be receptors, they won't have the channels. This has a channel, ligand gated ion channel, क्योंकि इसका नाम ही channel है, right? So this doesn't need any further discussion. और हाँ, ये मुझे बहुत important लग रहा था. Let's discuss this. इसमें ये है कि हाँ, this looks interesting. Do you think we should discuss it? या ये बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगी? चलो एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, काम आएगा. इसमें यह है कि निकोटीनिक और मस्क्यूरेनिक जो एसिटाइल मस्क्यूरिनिक मस्करीनिक ओके निकोटीनिक एंड मस्करीनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स होते हैं. जो निकोटीनिक है वो लाइगेंड गेटेड है, और जो मस्करीनिक है वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है. सो इट्स मेटाबोट्रोपिक. और निकोटीनिक आयोनोट्रोपिक है क्योंकि वो लाइगेंड गेटेड आयन चैनल है. और इसमें आपका चैनल भी उसी जगह पर होता है, रिसेप्टर भी उसी जगह पर होता है. मस्करीनिक में ऑब्वियसली नहीं होता क्योंकि वो तो जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स वाला है ना. और इसमें सब कुछ सेम ही है, बस निकोटीनिक इज फास्टर. निकोटीनिक क्या है? लाइगेंड वाला, ठीक है, आयोनोट्रोपिक लाइगेंड वाला. मस्करीनिक जीपीसीआर वाला है, मेटाबोट्रोपिक. और क्या, बस दैट्स अबाउट इट. दिस इज ब्लॉक्ड बाय निकोटीनिक इज ब्लॉक्ड बाय कुरारी, एंड muscarinic is blocked by atropine. So that's about it. Moving on. अब कैरियर प्रोटीन्स की तरफ आते हैं. इसमें यह है कि कैरियर प्रोटीन्स मैंने बताया था कि वो डिफ्यूजन भी कर सकते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं. लेकिन कौन सा डिफ्यूजन करते हैं, सिंपल या फैसिलिटेटेड? नो, दे नेवर डू सिंपल डिफ्यूजन. हमेशा, क्योंकि सिंपल डिफ्यूजन में तो दे डोंट नीड एनीथिंग एट ऑल. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में यू हैव अ कैरियर प्रोटीन, या तो चैनल भी हो सकता है, और जो आपको फैसिलिटेट कर रहा होता है डिफ्यूजन को, राइट? सो इट्स अ कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन. Up in Guyton, there was this line written that said, as the concentration of diffusing substance increases, the rate of simple diffusion continues to increase proportionately. अगर simple diffusion होती तो जैसे ही concentration of the substance increases, उसके साथ साथ rate of simple diffusion also increases proportionately. But in the case of facilitated diffusion, बेशक अगर even the rate of diffusion cannot rise higher than the Vmax level. बेशक आपके सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, बट टू अ सर्टेन अमाउंट, उसके बाद वी मैक्स लेवल अचीव हो जाएगा, और उसके बाद द रेट ऑफ डिफ्यूजन वोंट इंक्रीज, इट विल रिमेन एट दैट लेवल. And what is it that limits the rate of facilitated diffusion? It's the mechanism. जो mechanism है आपके facilitated diffusion का, that is what limits the rate of facilitated diffusion. अब mechanism, what do we mean by mechanism? इसका मतलब ये है कि इसका ना एक बहुत ही like it has a mechanism in which if you see figure 4.8 in your guide, and you'll notice कि आपका जो ये जो क्या कहते हैं कैरियर प्रोटीन है, इसके एक तरफ बाइंडिंग पॉइंट होता है, उस पर आकर आपका ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल लगेगा, फिर ही कंफर्मेशनल चेंजेस आएंगे, एंड उस कैरियर प्रोटीन का मुंह दूसरी तरफ खुलेगा, एंड देन इट विल रिलीज द सब्सटेंस. हाँ, यही वाला फिगर 4.8. तो फिर मुंह दूसरी तरफ खुलेगा, एंड देन दैट सब्सटेंस विल बी रिलीज. सो दिस इज बेसिकली द मैकेनिज्म, और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है बॉडी के लिए, बिकॉज सिर्फ एक ही बाइंडिंग पॉइंट है ना, तभी दिस इज व्हाट लिमिट्स द रेट ऑफ डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. अब जब कैरियर प्रोटीन की बात करते हैं तो इसके इसके बारे में दिमाग में सबसे पहले आता है ग्लूकोज, राइट? ये ग्लूकोज की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है विद द हेल्प ऑफ ग्लूट्स, व्हिच इज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, दीज आर कैरियर प्रोटीन्स. इनकी वजह से ही हमारा ग्लूकोज इस तरह बिल्कुल इसी मैकेनिज्म के साथ ट्रांसपोर्ट होते हैं. हमारी बॉडी में 14 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, जिसमें से जो GLUT4 है, that is activated by insulin, that's insulin dependent, right? This increases the rate of facilitated diffusion of glucose as much as 10 to 20 fold in insulin sensitive tissues. Insulin sensitive tissues कौन से हैं? Adipose tissue, उसके बाद skeletal muscles, ठीक है, तो ये और smooth muscles भी हो सकते हैं, बल्कि cardiac, I think cardiac muscles भी हैं, ठीक है. ये तीन आपके sensitive हैं, insulin sensitive tissues. तो GLUT4, it's activated by insulin, so it's an insulin dependent glucose transporter. अब इसकी भी ये चैट जीपीटी की है, let's read this information. GLUT4 is a glucose transporter protein that helps move glucose from blood into the cells, mainly in muscle and fat, adipose tissue, skeletal muscle, cardiac muscle, adipose tissue. ये है आपके
insulin sensitive tissues. At rest, GLUT4 is stored inside the cell. हाँ, very important इसका mechanism कि GLUT4 normally vesicles में होता है. जब insulin is released after a meal, अब खाना खाया है, insulin release हुआ है, it's going to signal the cell to move GLUT4 to the cell membrane. Normally GLUT4 अपने vesicles के अंदर पैक हुआ पड़ा होता है. खाना खाया, insulin बढ़ा, insulin आकर signal कर देगा for these vesicles to come and bind to the membrane. मतलब ऐसे पाइनोसाइटोसिस जो भी इसका mechanism था होता है और ये आकर पाइनोसाइटोसिस तो खैर नहीं था बट जो भी था आकर इट इमेजिनेट्स into the cell membrane और वहां जाकर GLUT4 अटैच हो जाता है GLUT4 then allows glucose to enter the cell lowering the blood glucose levels so this is basically insulin dependent right तो क्या मैकेनिज्म है ये जो GLUT4 है आपका वेसिकल्स के अंदर पड़ा होता है अब जब ये वेसिकल्स के अंदर पड़े और साइटोप्लाज्म है ना तो खाना खाया इंसुलिन बढ़ा इंसुलिन आकर इन वेसिकल्स को मेम्ब्रेन पे लेकर जाएगा मेम्ब्रेन में आपका GLUT4 रिसेप्टर अटैच हो गया रिसेप्टर तो नहीं है ये क्या है ये कैरियर प्रोटीन है GLUT4 क्या है कैरियर प्रोटीन इट्स गोइंग टू कैरी ग्लूकोज इनसाइड और आपकी ब्लड शुगर लोअर होगी दैट्स मैकेनिज्म so insulin is the main stimulator उसके अलावा very important that people forget is the exercise or muscle contraction ये भी हमारे GLUT4 की मूवमेंट कराता है towards the membrane अगर आपके पास इंसुलिन नहीं है तो एक्सरसाइज करो मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी उससे भी GLUT4 so these are the two stimuli very important और या उसका भी पूरा आप पढ़ सकते हैं GLUT4 जिनको insulin resistance like type 2 diabetes insulin fails to move GLUT4 to the membrane less glucose uptake high blood sugar तो जिनको type 2 diabetes होती है उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो इंसुलिन ये रेजिस्टेंस की वजह से मतलब सेल पर इंसुलिन इफेक्ट ही नहीं कर रहा था जिसकी वजह से जो इंसुलिन है फेल्स टू मूव GLUT4 टू द मेम्ब्रेन तो फिर ग्लूकोज का अपटेक ही नहीं होता ग्लूकोज ब्लड में ही रह जाता है तो हाई ब्लड शुगर हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल शो होता है ठीक है एंड एक्सरसाइज कैन हेल्प दीज पीपल क्योंकि अब इंसुलिन तो इफेक्टिव नहीं है तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है मसल कॉन्ट्रैक्शन फिर जोन टू स्टिमुलेट GLUT4 इंडिपेंडेंटली ऑफ इंसुलिन और हाँ GLUT4 क्या है इट्स फाउंड इन इंसुलिन सेंसिटिव इट्स इंसुलिन इन GLUT4 is an insulin sensitive glucose transporter it's found in skeletal muscles heart adipose tissue it's stimulated by insulin and exercise its function is to facilitate glucose uptake into the cells its clinical importance is it's impaired in insulin resistance and type 2 diabetes right so GLUT4 सिर्फ वो insulin sensitive है जो GLUT1 and 3 हैं they ensure glucose supply to the brain जो GLUT2 है it acts as glucose sensor in the pancreas और जो GLUT5 है that acts as a fructose transport उसके बाद it works for fructose transport insulin sensitive tissues these are tissues whose glucose uptake or metabolism is directly stimulated by the insulin जो directly affect होते हैं by insulin examples skeletal muscles cardiac muscle and adipose